पनपिए, दुख जस हरी जड़ हो, व्यर जस फैये। हिमान में यूं छंतक, गंगजियों में पानी छंतक, यो दिन और यो मास भेटने रहे। अगासात चार उकाव, धरती चार चकाव है जय, सियाप जस बुद्धि हो, स्यों जस प्राण हो। Very good morning to all of you. On this auspicious day of Harela, I, Riddhi Kanwal, with my classmates, welcome you to the digital assembly of grade 8C. No day can be started without remembering the Almighty God. So join your hands and close your eyes for the morning prayer. तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो जो कल खिलेंगे वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। Today, I am Parth Pandey here for speaking vision of the school. To inculcate moral and ethical values among students along with academic excellence and all-round qualitative development with practical knowledge, deep-rooted value system by providing contemporary education to serve for larger cause of society and nation. Thank you. Divyanshu Rathore of grade 8C. Pledge. India is my country and all Indians are my brother and sisters. I love my country and I am proud of a rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give respect to my parents, teachers and all elders and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. In their well-being and prosperity along lies my happiness. Thank you. Good morning. Today's thought is do not follow majority, follow the right way. I want to repeat my thought, do not follow majority, follow the right way. Thank you. Harela is celebrated in the Kumaon region of Uttarakhand. It is one of the most important festivals of Kumaon and is celebrated with great zeal and fervor, especially by agriculture and farming-based community. Harela is celebrated every year on the first day of Shravan, that is Kark Sankranti. The festival marks the beginning of sowing season and is celebrated for a prosperous harvest year. About 9 to 11 days before Kark Sankranti, households sow the seeds of grains in a pot or a flat wooden pane called chalk. The pot is kept in a dark room away from sunlight and the seeds are watered twice or thrice a day. The number of seeds sown are based on the number of family members. According to the tradition, the responsibility of sowing the seeds lies with the mother figure of the house, and the responsibility of watering the seeds lies with the unmarried daughter of the household. On the day of Sankranti, all the members of the household get up early, take part and immediately start the preparations of the festival. The intention for sowing the seeds for celebrating Harela is to determine the germination status of the grains for a particular year. Harela is planted for bringing peace, happiness and prosperity to the family. As Harela symbolizes the sowing season and new harvest, it advocates the saving and conserving of environment. It is believed that
Trees grown on Harela will undoubtedly grow and live healthy. Thank you. हरेला पर्व की आप सभी को शुभकामनाएं। आज मैं लावण्या आप सभी के समक्ष हरेला पर्व पर कुछ कहना चाहती हूँ। हरेला का अर्थ होता है हरियाली। हरेला उत्तराखंड राज्य के सीमा क्षेत्र में हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाला पर्व है, जो कि सावन के महीने में मनाया जाता है। क्योंकि ये पर्व मूलतः हरियाली व खेती से जुड़ा है, इसीलिए प्रमुखतः यह त्योहार कुमाऊं के किसानों द्वारा मनाया जाता है। घर के बड़े सावन महीना लगने से 10 दिन पहले एक बर्तन या कटोरी में कुछ मिट्टी भर के 7 तरह के अलग अलग धान, गेहूँ, जौ, उड़द, गेहूँ, सरसों और भट बो देते हैं। रोजाना पानी छिड़ककर इसमें पौधे उगने का इंतजार किया जाता है। इन पौधे को हरेला कहा जाता है और फिर हरेला पर इनको काट कर भगवान के चरणों पर चढ़ाकर पूजा की जाती है। वह अच्छी फसल की कामना की जाती है। भगवान का आशीर्वाद समझकर कुछ पौधे सिर पर और कान के पीछे लगाए जाते हैं। इस दिन घर के छोटे बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। घर की कुंवारी लड़कियां सबको पीछे लगाती हैं। इसके बाद उनके कुछ लड़कियों आशीर्वाद स्वरूप दिए जाते हैं तथा दीर्घायु और चतुर्पनों जैसे आशीर्वाद दिए जाते हैं। लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही एक दिन में कुछ अच्छे पकवान बनाए जाते हैं। आसपास A very good morning to all of you. I hope you all are safe and healthy at your places. So today the Kumaon region of Uttarakhand is celebrating an auspicious occasion, that is Harela. Harela means the day of greenery. This day is very important for the farmers, as it is the day when they start their sowing cycle in their respective fields. This festival Harela connects people with nature and environment. Protection of environment has always been in the culture of Uttarakhand. Every year, all the people of Kumaon region of Uttarakhand participate in the plantation as much as possible. So, we should also participate in this plantation every year on this day, so as to take our steps forward to the protection of our environment. And so, I request everyone to plant at least one tree on this day, as this day reminds us every year that it is very important to protect our environment, to protect our nature. So, I want to bind up with some lines, that is, शुद्ध पर्यावरण है जरूरी, ना समझो इसको मजबूरी, प्रयत्न सभी का यही हो सारा, प्रदूषण रहित उत्तराखंड हमारा. Hello class, my name is Prajwal Martolia of class 8C and today I am singing the national anthem in front of you all. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाये तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे.